Today we are going to solve last question of quadrilaterals chapter, that is question number 7 of exercise 8.2. With this chapter or exercise will be complete or chapter will be complete. Now this one is a sporting figure. The sporting figure is not given in the exercise. That's why you have to construct by yourself. You have to draw it by yourself. ABC is a right triangle, right angled at C. We have a triangle A, B, C, right triangle. The right angled at C means angle C is equal to 90 degree. This one is triangle. Then a line through the midpoint M of hypotenuse AB. We have this line, line L, through the midpoint M of hypotenuse AB. AB is the hypotenuse and according to question, M is the midpoint of AB. A line is drawn, name of line is L, and line is drawn through the midpoint M, then parallel to BC. This line, line L is parallel to BC. These two are parallel, ये भी आपको याद रखना है. The line intersects AC. ये जो line है, it intersects AC at point D. This one is the question. Firstly, we have triangle ABC. Then M is the midpoint of AB. After that, this line, line L is parallel to BC. This line is parallel to BC. L is parallel to BC means MD is parallel to BC. After that, three important parts are here to prove. First one is D is midpoint of AC. हमें ये prove करना है D is the midpoint of AC. Second one, MD is perpendicular to AC, and third one is this one. So prove करेंगे इनको one by one. Firstly, we have triangle ABC right angled at C. Now first part is we need to prove D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. Firstly, ignore everything. We have only a right triangle and triangle is ABC. A, B, C. This one is given. We are given a right triangle ABC. Also, M is the midpoint of AB. Then this line, MD कह सकते हैं या फिर L कह सकते हैं. मैं MD लिख रहा हूँ. MD is parallel to BC. Now, what is converse of midpoint theorem? Just recall what was the converse. A line drawn to the midpoint of one side of a triangle. Midpoint of one side parallel to another side. ये दो conditions satisfy हैं. Midpoint of one side parallel to another side. So converse of midpoint theorem क्या कहता है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, line is drawn to the midpoint of one side, you can say parallel to second side, then the line bisects the third side. ये midpoint theorem कह रही है कि this line bisects the third side. It means this line bisects AC. Bisect means D is the midpoint of AC. So first part हमारा यहीं पे proof हो जाएगा. हम ऐसा ही करेंगे. We will start with the first part. In triangle ABC, we have M. M is the midpoint of M. किसका midpoint है? AB. M is the midpoint of AB. Then MD is parallel to BC. कॉमन डाल रहे हैं. MD is parallel to BC. Therefore, by converse of midpoint theorem. What is converse of midpoint theorem? D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. और first part is proved here. First part हमने prove कर दिया. Now second part, MD is perpendicular to AC. हमें prove करना है MD perpendicular to AC.
एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब एम डी कब परपेंडिकुलर होगा? जब ये एंगल या ये एंगल जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया, या फिर ये एंगल जो मैंने रेड कलर से मार्क किया, इन दोनों में से किसी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। अगर ऐसा प्रूव कर लेते हैं देन वी कैन से एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली वी हैव ट्राइंगल हियर, अगेन सेम ट्राइंगल, बट इस ट्राइंगल का मैं ये पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ। वी हैव ए सी, देन डी इज द मिड पॉइंट, वी जस्ट प्रूव्ड डी इज द मिड पॉइंट. We have another point M. Now this one is triangle A M D, and then triangle C M D. अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करता हूँ, कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? We have कॉन्ग्रुएंसी से पहले अगर मुझे ये प्रूव करना है दिस एंगल इज 90 डिग्री, वो तो बिल्कुल सिंपली हम प्रूव कर सकते हैं. We know these two lines are parallel. इसको मैं नाम दे रहा हूँ M, then D. This one is BC. If these two lines are parallel and this one is a transversal, this one is C point. We know angle C is equal to 90 degree. अगर angle C 90 है C BC के ऊपर, so MD के ऊपर कौन सा एंगल होगा? This one. These two are corresponding angles. We know. We have discussed in the chapter lines and angles. हमने बड़े अच्छे से ये डिस्कस किया what are corresponding angles. तो आपने देखा these two lines are parallel. जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी यहाँ से, this one is transversal, so BC के ऊपर ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री. सेम MD के ऊपर ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा. रीजन क्या है? These two are corresponding angles. तो मैं ऐसा करता हूँ, let this angle be 1. This one is angle 2. Since MD is parallel to BC, MD is parallel to BC, therefore angle C is equal to angle 1. मैं लिख सकता हूँ ऐसा, this one is angle C, this one is angle 1. These two are equal. Reason क्या है? Corresponding angles. Now this angle 90 degree means ये angle 90 degree होने का क्या मतलब हुआ? MG is perpendicular to AC. ये angle 90 degree. MG perpendicular to AC. This one is second part of the question. हमने second part भी prove कर दिया. Now third part. Third part के लिए भी हमने discuss किया. मैं ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहा हूँ. थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? सी एम इक्वल टू एम ए. तो ये बाद में देखेंगे. फर्स्टली हमें सी एम इक्वल टू एम ए. तो मैं ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करूंगा. एक में सी एम फॉल करता है, एक में एम ए फॉल करता है. दिस वन इन ट्राइंगल सी एम डी एंड ट्राइंगल ए एम डी. इन दोनों ट्राइंगल्स में दिस वन सी एम डी ए एम डी. दिस वन इज एंगल 2, दिस वन इज एंगल 1. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा. ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. देन ए डी इक्वल टू सी डी. दीज टू आर इक्वल. ये दोनों क्यों इक्वल है? बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट. यहाँ हमने प्रूव किया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. सो दो पार्ट्स हो जाएंगे. Now MD equal to MD. MD is common in both the triangles, so we can say MD is equal to MD. That is, three corresponding parts of both the triangles are equal. So these two triangles are congruent. Now you can see angle 1 is equal to angle 2. तो angle 1 के सामने AM, angle 2 के सामने CM. That is, CM is equal to AM. देखेंगे यहाँ पे इस triangle में AD equal to CD. AD is equal to CD. Reason? Proved. आप लिख सकते हैं D is the midpoint of AC. हमने प्रूव किया D midpoint, so this is proved. AD equal to CD. Then angle 2 is equal to angle 1. Each 90.
Third part, MD is equal to MD, common. Therefore, triangle CMD congruent to triangle AMD. Congruency condition कौन सी लगाई? Side angle side by SAS congruency. When these two triangles are congruent, we can say this one CM equal to this one MA. CPCT. CM is equal to MA. Now you also know M is the midpoint of AB. जब M midpoint of AB है तो AM जो होगा that will be half of AB. लिखूंगा also MA equal to half of AB. Reason क्या है? Because M is the midpoint. M किसका midpoint है? Of AB. Now MA equal to half of AB. MA किसके बराबर है? CM के बराबर. It means CM equal to MA equal to half of AB. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं. Let this be equation 1. This one is equation 2 from equations 1 and 2. If we compare these two equations, CM equal to MA, ये दोनों तो equal हैं. CM equal to MA equal to, अब MA किसके बराबर हो जाएगा? Half of AB. This one is question number 7. हमें ये प्रूव करना था third part. CM equal to MA equal to half of AB. So question number 7 is complete with this question or exercise. 8.2 is also complete. Now we have only some of the theorems of the chapter to prove, and we will discuss those theorems in the next video. Thank you.